Hello everyone, and welcome back to the Fluctus channel. According to Chinese records, the matchstick dates back at least as far as 1366. While we have since come up with many more technologically advanced ways to start fires, the humble match remains an essential part of life, especially in places like Pakistan. In fact, Pakistan is home to one of the most extensive matchmaking facilities in the world. A factory that is actually capable of making millions of matchsticks in a single day. The process starts, of course, with wood. For matches, manufacturers tend to prefer softwoods, like aspen or poplar. Fortunately, softwoods grow in abundance across Pakistan's forested regions. Once the trees are felled, the logs are cut, bucked, and prepared for easy transport. Back at the factory, dozens of workers unload the logs and pile them onto metal wheelbarrows outside the factory. At this point, the logs are still too large to be put to immediate use, so the first step in the production process is to cut them down to a more manageable size. Since the bark has no use to the process, another team of workers takes the cut logs and scrapes the bark off using a stripping tool. The stripped logs are then put into an industrial lathe. As the logs spin, sharp blades cut them into thin sheets, typically under a centimeter thick. माचिस एक छोटी सी चीज़ है देखने में, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल फैक्ट्री है। जो इसकी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक सेक्शन से माल दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो कम से कम इसमें 14 तक तो इसमें सेक्शन है, और हर सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। The paper-thin sheets are then stacked atop a conveyor belt, where they are slowly fed into a chopping machine. This cuts the sheets into tiny sticks. All approximately the same size. From here, the sticks are cured in an oven, which dries them out and ensures they will be hard enough to function as needed. At any given time, the factory will have millions of dried matchsticks piled up. तो सबसे मुश्किल जो इसमें काम है कि इसके रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। पैकिंग मटेरियल में, इसके केमिकल में, इसके अलावा वुड में, अगर हम देखें तो इसमें सैकड़ों किस्म की जो है ना वो रॉ मटेरियल है। तो सबसे मुश्किल जो इसका काम है, तो इसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इसका मुश्किल है। सप्लाई चेन जो इसको हम कहते हैं, सप्लाई चेन इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। For efficiency's sake, the matchsticks need to be sifted together before being coated. This process also helps ensure that they are all a perfectly uniform size. To prepare for the chemical dip, the matchsticks are loaded into another conveyor, this time with individual slots for each match.
The matches are then dipped in a series of chemicals that make up the match head. This is typically a combination of potassium chlorate, sulfur, antimony, trisulfide, and a binder to hold the composition to the matchstick. Dye is also included in the mixture, which gives the match heads their reddish hue. After the dipped matches have dried, they will be placed into racks and moved into the packaging area. This particular factory does its own packaging on site, using specialized printers to create and cut cardboard matchbooks by the thousands. As with the matchstick production process, the box assembly is largely automated. Once the boxes are finished, the racks of finished matches are loaded into a sorter. This distributes the matches into the boxes in the proper amounts. मैच का प्रोसेस है वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोसेस है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन, क्योंकि आपको पता है कि ये छोटी सी चीज़ है बट इसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है, जिस तरह आपने फैक्ट्री में विजिट करके देखा होगा. इसमें प्रिसीजन रखना और मार्जिन क्योंकि बहुत कम होता है और वॉल्यूम की सारी वो होती है, सो वेस्टेज को कंट्रोल करना और ख़ास तौर पे जो हमारा रीज़न फॉर सक्सेस है वो क्वालिटी है. सो क्वालिटी को मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन अगर एक कंज्यूमर हल्की सी नमी की वजह से माचिस को यूज़ नहीं कर पाता, वो माचिस नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदता. Once the boxes are filled, the boxes are shut, sorted, and prepared for delivery. हम क्वालिटी पे जो एम्फोसिस रखते हैं वो कोई और कंपनी नहीं रख सकती. हमारा जो बोर्ड है, नंबर ऑफ स्प्लिट, हम नंबर ऑफ स्टिक्स जो हम तीली डालते हैं डब्बी में, जो बोर्ड की स्ट्रेंथ है, जो मसाले की वाटर प्रूफिंग है, वो पाकिस्तान में कोई उसको मैच नहीं कर सकता. इसीलिए सावन के महीनों में भी हमारी माचिस बड़ी करामत होती है और ये हमारा नंबर 1 रीज़न फॉर सक्सेस है. वी हैव 2 फैक्ट्रीज, वन इज़ इन पेशावर, एक हमारी लाहौर में है. टोटल हम तकरीबन दिन के वी मेक अबाउट 10 million match boxes in one day.
And while it may seem surprising that there is still such a demand for matches, it's important to note that the market for matchsticks is still relatively large. The United States, for instance, imported $16 million worth of matches in 2021, followed by Nigeria, which spent $14 million. The largest exporters are India, Sweden, and of course, Pakistan. For this reason, it's likely this operation will remain profitable for quite some time. That's the end of this video. We hope you enjoyed it. Make sure to subscribe to this channel so you don't miss any of our new content. See you next time.